Hello everyone, are we live? Welcome to one and all present here. And today we will be continuing our topic that we previously took, and that was two pointers wala concept. Okay, let me just check if we are live. Yeah, good. Okay, am I audible? We'll be waiting for a few minutes and then we'll be starting. Okay, okay, okay. I am audible, I can see. Yeah. So, what we'll be discussing today is threesome problem, which is a rated medium on lead code. This is problem number 15. The second problem that I have put into the Notion is, if you haven't checked, you can check it here. Notion. The links are shared in the description as well as in the community. These problems are being updated on a regular basis along with the dates and the type of problem. So you can check it there. Okay. The second problem that I put was this one. If you'll check in two pointers, container with most water. Okay. If you click here, you will proceed to this link forward and then you can start your work. So these two are the questions that we'll be discussing today. And while discussing this question is what we'll be learning some of the concepts that we'll use here. Okay. And this is again medium and question number 11. Yeah. So let's get started with the topic today. And the first one is threesome. Okay. Okay. If you have like visited our previous lecture on two pointers, you will be quite familiar with this topic. And we'll see what changes this question provides us. Okay. This is somewhat based on the logic of two sum, but the only necessary change here is that the sum adds up to zero and not to a particular target. Okay. So now let's look at the question and then we'll see how we'll proceed. Given an integer array nums, return all the triplets nums of I, nums of j, nums of k, such that I is not equal to j, I is not equal to k, and j is not equal to k. So that automatically means I is not equals to j. So this means that the indexes that we are that the elements we are returning should not be equal, okay? And nums of I plus nums of j plus nums of k equals to 0. And notice that the solution must not contain duplicate triplets. What do they mean by duplicate triplets is, um, say if you have one triplet as minus 1, and 0, and we can't have another triplet as minus 1, and 0. Okay, so this is a duplicate triplet which we don't want. So I hope you have understood the question. Let's look at few examples here. Let me just paste this also here for better understanding. Yeah. So as we are given in the example, we are told that the nums array is minus 1, 0, 1, 2, minus 1, and minus 4. So we need to return three elements whose sum gives us 0. Okay. So as we can see, it's minus 1 and 2. So what will it? Minus 2 and 2 will make 0. Okay. Then minus 1, 0 and minus 1, which is in the this particular vector, minus 1, 0 and 1 will also make the sum equals to 0. Okay. So how we'll proceed with this question? Let's look at it. First, of course, we'll look at how we'll proceed with the brute force approach. So brute force is quite simple here, but there is just one catch in brute force,
and that is uh, to avoid these duplicates. Say what we can do in brute force is we can have one as I, will one as j, and one as k, and we'll have three for loops. Okay, for I, for j, and for k. But in order to avoid duplicates like these, what we'll do is we'll sort this vector first. Why are we sorting this vector first? Because see, if we have minus 1 here, we have minus 1 here, and we have 0 here. So say if our I is stuck here and j moves at 0 and this moves at minus 1 or any other point, so what will happen is वो वापस से वहां पे आएगा after one time, right? So you will again consider minus 1 here after a certain point when this I will go here. So you are again again like looking at that particular minus 1. So to avoid that, what we will do is to avoid this particular thing, what are we gonna do is we are gonna sort the array. What will happen after sorting is I'll get a vector something like this minus 1, 0, 1, and 2. So now if my I, you see, if I have my particular I and j here, ijk here, what we can do is to avoid these duplicates, what we can do is consider this first element only and avoid the rest of the elements which are same. Okay, I'm repeating what we are doing is we are considering only the first element which is minus 1 and we are not considering the elements which are same क्योंकि triplets आना है ना तो triplets में minus 1 चाहिए. Again see when we are taking I as minus 1, j is minus 1 and k is minus 1. What we will not do is कि हम लोग वापस से I यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे. अगर करते हैं तो ये वाला आने का चांसेस होगा कि वापस से I यहाँ पे आ गया अगर तो अगर minus 1 0 कहीं आगे में रहा minus 1 0 तो j and k will move forward and will give you another triplet which will be a duplicate of it, right? So we don't want it. So we are not considering I here. We can consider j, we can consider k, but we are not considering I at this point. And that is why we are sorting this array. This is the only catch here that we need to sort the array in order to avoid duplicates. Okay. So let's see how we are doing this. First of all, what we can do is, if you look at this particular question, we need to return vector of vector integer. What do we mean by vector of vector integer? Vector of vector int. So what do we mean by this is we have vectors inside a bigger vector, right? So let's say this is one bigger vector and we have smaller vectors inside it, okay? Which with its own elements, okay? We have smaller vectors inside it. So this is what we mean when we say vectors inside vector. And this is how we define it. That is vector of vector that will hold my integer values, right? So in order to return something like this, we'll have to define something like this. Let's define this answers और फिर ans को ही return कर देंगे हम लोग वहाँ पे. Now what we can do is, first as I told you, we need to sort the array, right? So sort and this nums is given. So we write nums dot begin till nums dot end, right? We need to sort from here to here. Now once our vector is sorted in this manner, what we can do is we can have I, j and k. So we can have for I is equals to 0, I is less than that nums dot size I plus plus. The same for j. Now j can be starting from I plus 1. Okay, we don't need to consider the back thing from of I because that was already covered in when we have the loop that runs before it. Okay, so we need not consider something again and again. So what we can do is we can have I from j from I plus 1, and of course j will be less than nums dot size only j plus plus. Now we need another k. Okay, and then what we'll do is we'll simply check if their values when added equals to 0 or not. Okay, if it's equals to zeros,
0, then what we'll do is we'll push that into our result vector. Okay, अभी ये हो गया. So now what we are doing is, if nums of I plus nums of j plus nums of k हमारा 0 होता है, तो since it's a one line statement we can write it here. What's our name? Vector's name, that is ans dot push back. Now how are we going to push back inside this vector? We are going to define it like this, because we are pushing a vector. Okay, so we'll have to define the vector overall in order to push. So we write nums of I, nums of j, and nums of k. Okay, nums of k here. Once it's pushed back, so it's done. And now our what we have to do is just to return that particular answer. Okay, so this kind of approach is what we'll have to do in brute force approach. Or rather, one thing which we can do is to avoid duplicates. Let's say instead of this vector, we take set. Now, let me tell you what set does. We can also take this set here. Okay. What a set does is, so set is a data structure which holds discrete but unique values. Okay. Set will always hold unique values, unique elements. So inside a set, you won't find -1 and -1. -1 is done, so set will not take -1 again. Set always takes unique elements. So remember that whenever we need to avoid duplicates, here in this case, we need to avoid something that is same. Okay. So what we'll do is we'll have a set which will take unique elements. And in this case, the elements are a vector. Okay. Now, in order to return this set, we need to return it as a vector. So how we will do that is we will assign this here vector of vector integer. अभी वो पूरा सेट को हम लोग को वेक्टर बनाना है. सो हम लोग ans dot begin से लेकर ans dot end. In the first lecture, when I told you how to create vectors, I have also discussed this thing. Whenever you define something inside a vector, so you can create a vector from a vector or from a set. So begin से end तक के लिए एक अगर हम लोग इसको एक वेक्टर में डाल दें, so that will be a vector, and hence we are returning this. Now again, the problem of this is the time complexity. As you can clearly see, we are sorting, that takes order of n log n, then this order of n inside this order of n, and then this is inside that these particular for loops. So overall, if we see, if we remove these constant terms and all, so overall, if you generally see, that is order of n log n plus order of n cube, which will give you big O of n cube only. So our time complexity here is order of n cube, which is of course not desired, because if you see, we have nums of length is 3000. So our time complexity, according to our time complexity, what will our runtime be? It will be 3000 to the power cube, which is of course a very big number, that is 27 time into 10 to the power 9. So right, 27 into 10 to the power 9, that's huge. So we don't have to do that. This was a brute force approach in order to understand कि हमें करना क्या है एक्चुअली. तो हमें 3 पॉइंटर ले सकते हैं और हम लोग को बस चेक करना है कि वो तीनों पॉइंटर का सम जो है वो 0 आ जाए. ठीक है. तो इसमें अभी दूसरा अप्रोच हम लोग क्या लगा सकते हैं, विच वी डिड ऑलरेडी डिड इन 2 पॉइंटर्स. इफ यू रिमेंबर, वी यूज्ड हैशिंग. ओके, तो एक अप्रोच हैशिंग पे लगा सकते हैं. टुडे वी विल टेक इन डेप्थ दीज कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज ये थोड़ा सा बेटर कॉन्सेप्ट्स है, और it has lots of inner paths to learn. Like, see, you have sets in this in the brute force example, you have hashing, so you learn map.
And then if you want to do the optimized solution, then we'll be learning the two pointer approach. Okay. So now what hashing will do is, see, हैशिंग में हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी एलिमेंट्स है ना, like this, these are the elements of it. So what we can do in hashing is that we can store the frequency of the elements. Okay. And as we will traverse it, what we will do is we will start decrementing the frequency. मतलब माइनस वन को अगर हम लोग एक बार देख चुके हैं, तो माइनस वन का फ्रीक्वेंसी एक बार कम कर देंगे. सो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस वन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टू होगा, क्योंकि दो बार है. बट एक बार ही हमने माइनस वन को सरपास कर दिया, तो हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करके वन कर देनी है. ओके. तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि डुप्लीकेट्स नहीं अराइज होगा, कि माइनस वन एक बार ही हम लोग कंसिडर कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे. ठीक है. How we will do it, it's a bit lengthy process, but we'll have to look at it. Okay. इसमें भी we need to sort it. First of all, we will sort it, we will put it into maps, and then what we will do is we will check this thing, what I told you here, कि हम क्या करेंगे इसमें, हम we are gonna consider the first element only, and every element that comes after it but is a copy of the previous element, we'll have to not consider it there. So what we can do in hashing is we'll have to sort the elements. Second, no, first of all, what we have to do is we have to put things into hash map. Okay. So put into hash map. Next, what we'll do is we'll sort the elements. Then we'll what we can do is for every particular I, for every particular I, what we can do is first of all we'll check if I is less than, of course, nums dot length or size, and what did I say? We'll only consider the first element. Okay, so in order to consider the first element, what we can do is nums dot size, वो हम लोग for loop में ही check कर रहे होंगे. So यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि if I is greater than zero रखते हैं. उससे क्या होगा कि जीरो का वैल्यू जब जब I equal to zero होगा, उस पॉइंट पे कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, we will do is nums of I is equals to nums of I minus one. तो जब जब ये चीजें पिछले वाले से इक्वल होंगी, तो what we'll do is we'll continue the loop. We do not have to enact anything. So what we can do is continue. ये ठीक है. ये एक चीज होगा जो हम लोग करेंगे, और इसके साथ साथ क्या करेंगे, हमें एज वी सेड वी नीड टू डिक्रीमेंट द फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी को हटाना होगा एक, क्योंकि हमने ट्रैवर्स कर चुका ना, तो फ्रीक्वेंसी एक कम करेंगे. अब इसी फॉर लूप के अंदर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव अ फॉर लूप फॉर जे, राइट. अभी जे का कहाँ से स्टार्ट होगा, जे व्हाट वी कैन डू इज स्टार्ट फ्रॉम, सॉरी, जे आई प्लस वन से. what we are doing here is एक बारी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. what we had minus 4 minus 2 minus 4 minus 1 minus 1 0 1 and 2. So one second. Yeah. So what we are doing here is for every particular I that we are fixing, for every particular I that we fix, we'll have a j that will start from I plus 1. Okay. And again inside j also what we'll do is we'll check whether or not it has duplicates. Okay. If we are considering minus 1, तो हम लोग यहाँ पे क्यों कंसिडर करेंगे, एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं. अभी एक बार ही हमने j भी ले लिया, I भी ले लिया, तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. तो हमने j स्टार्ट किया, ये ऑफ कोर्स नम्स डॉट वहां तक जाएगा. ठीक है. अभी देखो j का भी हमने फ्रीक्वेंसी कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी को इधर भी माइनस माइनस करना पड़ेगा. अभी इफ j इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ भी कर सकते हैं, और j इज ग्रेटर देन आई प्लस वन भी कर सकते हैं, क्योंकि आई प्लस वन ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहला एलिमेंट तो कंसिडर करना है ना. अगर हम पहला एलिमेंट भी छोड़ देंगे, बाकी का भी छोड़ देंगे, तो हम पूरा माइनस वन को डिस्कार्ड कर रहे होंगे. सो j इज ग्रेटर देन आई प्लस वन, ओनली देन व्हाट विल डू इज हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखना है.
कि अगर ऐसा है तो कुछ मत करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो नम्स ऑफ यहाँ पे जे का टर्म रहेगा इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ, so see how we'll run. J starts from this, so is j greater than I plus 1? No, so minus 1 is considered. But as j will move forward, when j will come here, is j greater than I plus 1? Yes. So what will happen is nums of j equals to j of nums of j minus 1? Yes. So it will do nothing and it will continue. What if this condition is not satisfied? What we will do is कि हमें I पता है, हमें हमें J पता है, तो what do we want? Our target is zero, right? अभी टारगेट क्या है? नम्स ऑफ I वाला पार्ट प्लस J वाला पार्ट प्लस K वाला पार्ट। तो हमें I पता है, J पता है, खोजना क्या है? K। तो हमारा K होगा क्या? नम्स ऑफ K विल बी माइनस ऑफ I प्लस J वाला, यही होगा ना? सो आर रिक्वायरमेंट इज this kind of logic. What we have used here, we already have used it multiple times if you check in our previous videos. This requirement वाला logic बहुत बार use हुआ है। अभी requirement हमारा क्या है? That is nothing but minus 1 into nums of I plus nums of j। यही requirement है ना? ठीक है, so this is the requirement. Now what we need to check, we are checking that whether or not it is present in that hash map with a frequency greater than जीरो। तभी तो मतलब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन जीरो होगा तभी तो वो प्रेजेंट होगा। सो वी विल चेक इफ मैप ऑफ, मैप का जो नाम रखेंगे हम लोग वहां पर, मैप ऑफ दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगर ये होता है तो व्हाट विल डू इज विल सिंपली पुश इनटू, और रादर इंसर्ट इनटू द मैप। व्हाट विल इंसर्ट? आई वाला, जे वाला और के वाला। तो मतलब वो एक वैलिड सॉल्यूशन है। सी, जब जब हमारा आई यहाँ पे होगा, जे यहाँ पे होगा, -1 -1, so we are having a total of -2. So what do we need to add to get 0? We need to add 2. So it will check for 2. अभी मैप में ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 1 है, so it is greater than 0, right? So what we'll do is we'll insert into this particular things. Okay, इसको थोड़ा हटाते हैं, कंफ्यूजिंग होगा नहीं तो। हम्म, अभी हमने इंसर्ट कर दिया। अभी क्या करेंगे कि okay, so we had for j, we had for k. Now what one thing we need to be taking care of is we need to reset the value of frequencies for this particular j. Why do we need to reset this value of frequencies? Because j तो एक बार ही ट्रैवर्स कर जाएगा ना हर बार आगे में, तो ये वन का भी फ्रीक्वेंसी को जीरो कर देगा, ये वन का भी फ्रीक्वेंसी को जीरो कर देगा, टू का भी फ्रीक्वेंसी को आगे में जीरो कर देगा। सो अभी देखो हमारा एक सॉल्यूशन तो ये भी बन सकता है ना कि -1 एंड 2, और -1 0 एंड 1, -1 0 1, ये भी तो बन सकता है। बट जैसे हमारा j -1 भी ट्रेवर्स करेगा ना, तो ये वैल्यू ऑलरेडी आई से एक बार कम होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। अगर j में मतलब अभी देखो -1 का फ्रीक्वेंसी 2 है हमारे पास स्टार्ट में, व्हेन आई विल कम हियर व्हाट आई विल डू इज विल डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी बाय 1। ठीक है, एंड नाउ व्हेन j विल कम हियर विल आल्सो डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी। तो अब ये जीरो हो गया है, तो इसको वापस से बढ़ाना होगा, तभी ये सॉल्यूशन कंसिडर कर पाएंगे हम लोग। तो जितना फ्रीक्वेंसी जे एक बार ट्रैवल्स करके कम कर रहा है ना, हम लोग क्या करेंगे उसको वापस से रिन्यू कर देंगे, मतलब रीसेट कर देंगे। तो एट दी एंड बस एक लूप चलाएंगे हम लोग कि फॉर जे इज इक्वल्स टू सेम आई प्लस 1 के लिए ही चलाएंगे, और जे वही सब रहेगा, बट व्हाट विल डू इज मैप ऑफ every particular value that is in j, which is nums of j, इसको एक बार वापस से बढ़ा देंगे।
क्योंकि ये जे ट्रैवर्स करने समय हमने कम किया था ताकि हम लोग डुप्लीकेट्स ना ले पाए। तो अभी क्या करेंगे, सबका एक एक बार बढ़ा देंगे वैल्यूज, ताकि अगला बार जब हम लोग कंसिडर करें तो समथिंग सम सॉल्यूशंस लाइक दिस विल आल्सो बी टेकन। ये वाला सॉल्यूशन, एक -1 यहाँ पे भी, -1 यहाँ पे भी है, राइट? सो दीज सॉल्यूशंस नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके, सो लेट्स सी हाउ विल कोड दिस। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने सॉर्ट करना है। और किसको सॉर्ट करना है, नम्स को सॉर्ट करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, नम्स डॉट बिगिन से लेके नम्स डॉट एंड तक तो सॉर्ट कर लिया। हाँ, सॉर्ट करने के बाद पुश इनटू हीप, हीप वो करना था। तो फॉर int num that belongs to nums, what you do is, oh rather, first create a map, unordered map. We create an unordered map of integer comma integer. Let's name it anything, let's name it count. अभी इस पर्टिकुलर काउंट के नम को बढ़ाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, व्हाट वी आर डूइंग हियर इज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट। ठीक है, तो हमने मैप तो बना लिया, अब क्या करना है, अभी आई के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर आई, सो विल सेट थिंग्स नाउ। वन थिंग वी कैन डू इज, लेट्स डिफाइन दिस वेक्टर, क्योंकि इसमें ही रिटर्न करना है हमने। तो एक तो इसको ऊपर में डिफाइन करके रखते हैं रिजल्ट बोल के, वेक्टर वेक्टर इंटीजर रिजल्ट्स। अभी आई को लेते हैं, फॉर इंट I is equals to 0, I is less than num start size I plus plus। ये हो जाने के बाद क्या करना है कि हर बार जब वो ट्रैवर्स कर ले एक बारी, काउंट नम ऑफ आई, इसको माइनस माइनस करके एक कम कर देना है। फ्रीक्वेंसी इज नाउ लोअर डाउन। ओके, नाउ व्हाट वी गोना डू इज, हमने फ्रीक्वेंसी लो कर दिया, बट अभी डुप्लीकेट्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि हमने आई को सेम नहीं रखना, सिर्फ पहले एलिमेंट को कंसिडर करना है, बट बाद बाकी उसके जितना भी डुप्लीकेट्स आए उसके, उसको हटा देना है। तो इफ I is greater than 0 and nums of I equals to nums of I minus 1, then do nothing but continue। ठीक है, अभी अपने को क्या करें कि j डिफाइन करते हैं, j is equals to I plus 1 से कहाँ तक, nums dot size तक। इनसाइड दिस व्हाट विल डू इज, अभी j का भी वो भी काउंट एक बार कम करना है, कि काउंट ऑफ num ऑफ j माइनस माइनस, यहाँ पे nums होगा। ठीक है, ये भी काउंट माइनस माइनस किया। अभी वो सेम जो लॉजिक हमने आई के लिए लगाया वो अभी जे के लिए लगाएंगे, फॉर जे इज greater than I plus 1 and nums of j is equals to nums of j minus 1, then we do is continue। oh, ये इसके अंदर रहेगा, बट अगर इक्वल ना हो तो हम क्या करेंगे, हमने एक रिक्वायरमेंट सेट किया कि हमारा रिक्वायरमेंट जो होगा वो -1 टाइम्स नम्स ऑफ आई जो है प्लस नम्स ऑफ जे होगा। ओके, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे होगा। अभी हमने चेक करना है उसमें मैप में एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो इफ मैप का नाम काउंट what, count rec, if it's greater than 0 means that it exists inside map, then push। अभी अगर एग्जिस्ट करता है तो हमने क्या करना है कि मैप वो रिजल्ट के अंदर डालना है हमने। ठीक है, तो रेस्ट डॉट पुश बैक
क्या क्या nums of I, nums of I, nums of j और वो रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर ऑर्डर में डालना चाहो तो दैट विल बी, यू कैन कीप इट लाइक दिस। ओके, वो पूरा एक सम जीरो होना चाहिए, बाकी उसका अंदर का रीऑर्डरिंग मैटर नहीं करेगा। टू माइनस वन भी होता तो शायद वो ले लेगा। सो दिस इज ओके। नाउ व्हाट वी नीड टू डू फॉर द फाइनल टचेस, वापस से जे वाला जो हमने किया था यहाँ पे, ये जो लिख रखा है कि जे वाले को वापस से रिस्टोर कर देना है। फॉर जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, जे इज लेस देन nums of size, is count of j प्लस प्लस। इतना हो गया, एक बारी वापस देखेंगे कि क्या हो रहा है। उसके बाद हमें रिटर्न करना है क्या, रिजल्ट। देखो, जस्ट लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ वेरी क्लियर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉर्ट द नंबर्स, ठीक है। फिर अभी एक मैप बनाया। फॉर नाउ जस्ट फॉरगेट दैट वी आर मेकिंग मैप्स, ओके। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट नोटिंग डाउन द फ्रीक्वेंसी कि कौन सा नंबर कितनी बार अकर कर रहा है, ठीक है। फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर काउंटिंग दैट पर्टिकुलर नम दैट इज इनसाइड नम्स एंड वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी एवरी टाइम। माइनस वन एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, तो हर बार प्लस प्लस होगा। Now we are creating a result vector. Now see, for int I is equals to 0 up to nums of nums size, up to nums of size of nums, what we do is we are decrementing the frequency of nums of I। मतलब माइनस वन अगर दो बार था तो अभी उसको एक बार किया है कि एक और बचा। ठीक है, दो था बट हमने एक को कंसिडर कर रखा है कि लेट्स से ये वैलिड सॉल्यूशन में है, तो बचेगा कितना, एक और, तो इसलिए उसको कम किया। एंड दिस इज टू बी चेक्ड, बाकी आगे अगर वो कुछ आएगा ना तो डुप्लीकेट ना हो जाए। दिस इज टू अवॉइड डुप्लीकेट, टू अवॉइड डुप्लीकेट्स। बिकॉज इफ यू सी कि हमारा इन दिस केस आई और जे, इसके अंदर का एलिमेंट सेम होगा ना, तो के तो ऑटोमेटिकली सेम होगा बिकॉज वी नीड टू गेट जीरो। सो वी नीड टू एनी हाउ अवॉइड दीज डुप्लीकेट्स आई और जे में, ठीक है, ताकि हमारा के मैच ना कर जाए। अभी जे के अंदर आते हैं, जे को आई प्लस वन से स्टार्ट किया है एंड तक, वापस से एक बारी फ्रीक्वेंसी कम किया ताकि ताकि हम जब यहाँ पे रिक्वायरमेंट को वापस काउंट करते हैं ना तो मैच ना करे, मिल ना जाए उसको, तभी कम करना पड़ेगा। नहीं तो माइनस वन दिखा देगा कि अवेलेबल है, विच इज नॉट अवेलेबल। सो वी आर डिक्रीमेंटिंग फ्रीक्वेंसी। नाउ इफ j इज ग्रेटर देन आई प्लस वन एंड नम्स ऑफ j इज नम्स ऑफ, वापस से वही कर रहे हैं हमने, वो हटाने के लिए, डुप्लीकेट्स हटाने के लिए ये किया है। नाउ इंट रेट इज इक्वल्स टू माइनस वन इंटू, जे हमारा रिक्वायरमेंट है कि ये दे दो भैया, हम सम जीरो कर देंगे। If count of rec is greater than 0, that means the frequency exists. The element is still present. So we are pushing that into our resultant vector. When after all this is done, before the next increment of I, what we are gonna do is we are gonna reset for every particular j. We are gonna reset this particular value. Let's try if it runs. What is the error? Oh, the workplace. Rest dot push back. Okay, we need to return it in a vector form, तो ये ब्रैकेट रह गया है। Okay, so this is accepted, okay।
And I think if I submit it, I don't know if it gives runtime error. Sorry, time limit exceeded error. It might or might not give it. Okay, it accepts it, but my time complexity is very bad. Why it's very bad? If you analyze this particular solution is, first of all, uh, we are creating a space requirement of order of n by creating maps. Okay, so this is one thing. ठीक है. Now उसके बाद का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा एनालाइज करो कि ये वाला स्टेटमेंट जो है दिस रन्स फॉर n टाइम्स, दिस ऑल्सो रन्स फॉर n टाइम्स. ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तो जा रहा ही है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जा रहा है, फिर ये सारा तो कांस्टेंट टाइम ले रहा है, बट हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का है. सो दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन टेक्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ big O of n square. Now, do we have any better approach? अभी तुम थोड़ा सा एनालाइज करो. So we can see is we are already sorting the sum, right? Okay, we are also sorting the sum. We are also storing it inside map. So if we can do it without storing it inside map, so that will save us the space. And let's see if that saves us time or not. Okay. So this is a two-pointer approach. Taking the same example that we had was -4 after sorting, of course. Let's write here. We are already, let's say we are sorting the array. So we are left with -4, -1, -1, 0, 1. Okay. Once we do it, how and what we can do to set up our pointers. Okay. So first of all, what we'll do is we'll sort it, then we'll have something the result as we'll initialize the result. Then for let's say we have a point, we have for a particular I, we have a pointer left and say right. This is for every I. Okay. So हम I क्या करेंगे, I को यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और फॉर एवरी आई विल हैव अ पॉइंटर. सॉरी, यहाँ से ना लेकर लेफ्ट को एक आगे से लेते हैं, क्योंकि ये वाला तो कंसिडर कर ही रहे हैं. तो मान लो ये लेफ्ट है और ये राइट है फॉर दिस पर्टिकुलर आई. अभी हमने चेक करना है कि नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एल प्लस दिस, इज इट इक्वल्स टू जीरो और नॉट. हाउ वी विल डू दैट इज, पहले हमें एक ये आई सेट करना है, फिर we will be taking two pointers here, and then we will play with this pointer in order to get this particular sum up to zero value. Let's see how we'll do it. पहले तो for I equals to zero, I हमारा let's say n है, वो फाइनल साइज यहाँ तक तो लेंगे. अभी यहाँ पे भी हमने एक चीज पे ध्यान देना है कि हमें डुप्लीकेट्स वापस से हटाने हैं. ठीक है, तो डुप्लीकेट्स हटाने के लिए क्या करेंगे, तो सेम चीज जो पहले किए थे वही चीज करेंगे. एग्जैक्ट स्टेटमेंट आई इज ग्रेटर देन जीरो अगर हो, एंड वही नम्स ऑफ आई, नम्स है ये, कंसिडर इट नम्स. ओके, एन यू लिखते हैं इज इक्वल्स टू एन यू ऑफ आई -1. तो वापस से वही करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे इस चीज को. अगर नहीं होता है, अगर सेम नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने टू पॉइंटर को इनिशियलाइज किया कि एल जो है वो हमारा i+1 है, आर जो है वो हमारा नम्स डॉट साइज -1 है. इस तरह से क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा. अगेन अब वापस से हम जो जैसे नॉर्मली टू पॉइंटर टू सम में लगाया था वैसे कर सकते हैं कि एल इज लेस देन आर, वही ओवरलैप करके आगे ना निकल जाए, इसलिए एल इज लेस देन आर. वी विल चेक फॉर आर रिक्वायरमेंट एज इट वाज, कि आइदर यू कैन डू कि रिक्वायरमेंट हम ले ले -1 इंटू, और फिर चेक करें कि अगला रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए जीरो बनाने के लिए वो छोटा या बड़ा है, उस हिसाब से हम पॉइंटर से को आगे पीछे शिफ्ट करेंगे. अब बिट सिंपलर वे इज कि हम लोग सीधा सम ही ले लेते हैं, सम ले लेते हैं सबका.
nums at this particular I plus nums at this particular L plus nums at this particular R. Okay. Now we have sum. अभी हमारा रिक्वायरमेंट है कि सम भैया जीरो होना चाहिए. Okay. But what if sum is greater than zero? What if sum is greater than zero? So if sum is greater than zero, so we need something that will decrease the sum to bring it to zero. So अभी डिक्रीमेंट कैसे होता है? एक सॉर्टेड एरे है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे है, ये 2 पे है, सम 8 है. 8 को हमको कम करना है, तो हम इसको इधर करेंगे या इसको इधर करेंगे? We need to decrement the sum, so we need to shift right pointer to 5. And so, and like similarly here what we'll do is we'll shift the right pointer backwards, क्योंकि sorted है, उसको कम करना है, so it will bring backwards. Else if sum is लेस देन जीरो, तो क्या करेंगे? अगर हमारा सम लेस देन जीरो है तो ऑफकोर्स एल प्लस प्लस करेंगे ना, क्योंकि ऑफकोर्स हमें सम को ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट करना है ताकि वो जीरो हो जाए. तो एल प्लस प्लस. एल्स एल्स मतलब अब एक ही कंडीशन बाकी है कि इक्वल टू जीरो. इक्वल टू जीरो हो गया तो हमने जो रिजल्ट बना रखा है उसमें पुश करेंगे. पुश बैक, आई वाला पार्ट, जे वाला पार्ट और के वाला पार्ट, वो पुश किया. और हमने कुछ नहीं करना. अगर पुश कर दिया है तो मान लो हमारा एक वैलिड सॉल्यूशन आता है, दिस दिस एंड दिस. ठीक है. तो अभी हमने आई यहाँ पे फिक्स कर रखा है -1 के साथ. तो you'll have to consider things. Okay, you'll have to consider some of the things that will like hinder your you to pass all of the test cases. तो यहाँ पे हमने -1 भी फिक्स कर रखा है, बट हमारा लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर फिक्स्ड नहीं है. ठीक है. तो एक सॉल्यूशन मान लो हमें दे दिया लेफ्ट पॉइंटर ने जीरो, और यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स है और एक एलिमेंट है 1. तो लेट्स से ये तो हमारा आई फिक्स है, यहाँ पे एल फिक्स है, यहाँ पे आर फिक्स है. So this can be one solution. Now there can be many other solutions, right? Let's say यहाँ पे x के जगह पे say we had one, let's say 3, that would make 2, and we had -2. तो हमें एक और कंसिडर करना होगा ये वाला पार्ट भी, कि हमें ऑलरेडी अगर सम जीरो मिल चुका है, that doesn't mean we have got all the triplets inside that particular sub array. Okay, so we had y -1 0 and 1, well and good. But now there can exist some other solutions also which will give you more triplets. So in order to consider these solutions, what we'll do is हमने push कर रखा है, but we'll also consider the rest of the सब array between those left and right pointer. इसके बीच का भी देखना पड़ेगा कि भैया और कोई तो नहीं है. Okay, once we are done with it, we are free to return result. So if there is any confusion here, let me add that code here, this code, for future references. So this is a code of the वो hash map वाला. 1 2 3. What? Don't know why is it here. Okay. So now we'll move on to write our approach of 2 pointers here. ठीक है. इसको reset करते हैं. Okay, let's go. इधर से description लिया जरा. First, what we had to do here, we'll take reference. पहले तो sort करना है. ठीक है, हमने sort करो भाई. num start begin से num start
Okay. Now we what we are doing is let's define this vector of vector integer our result. ठीक है. अभी हम लोग I को फिक्स करते हैं. For int I is equals to 0, I is less than nums dot size I plus plus. Now, one consideration we'll have to take is if I is greater than 0 and nums of I is equals to nums of I minus 1, what we do is we continue. ठीक है, ये हो गया. अभी अगर ये कंडीशंस नहीं है तो हमें दो पॉइंटर बनाने हैं. नेम इट L I plus 1 1 और नेम इट R. R को हमेशा हम ना एंड पे ही रखेंगे बिकॉज दैट द लार्जेस्ट नंबर आउट देयर और वहां पे I सबसे लास्ट में जाता है. R इज दी. अभी हमने टू पॉइंटर सेट कर दिया. अभी I को भूल जाओ. अभी ये दो पॉइंटर पे खेलना है. कैसे? एक तो पहले ओवरलैप ना कर जाए. कंडीशन डाल दिया. अभी हमने चेक किया कि सम क्या है हमारा. सम इज नम्स ऑफ I वो जो फिक्स है नम्स ऑफ L प्लस नम्स ऑफ R. ठीक है. अभी वही सब कंडीशंस कि अगर भैया सम हमारा जो है वो जीरो से ज्यादा है. Sum is more than zero, we need to bring back sum, so we need to shift R. Okay. Else if sum is less than zero, so we'll shift L. Else, here is a catch. Else it means we have the solution and hence we'll put it into the vector. So rest dot push back in the vector form. What will push? Nums of I, comma nums at L, comma nums at R. Once we push, we need to consider कि if there are some other examples between that L and R, so we carry on this procedure until and unless that particular while loop exists. Cool. Finally, what we'll do is इतना सारा ब्रैकेट कैसे आ रहा है. अच्छा एक for का है, एक while का है, और यहाँ पे लिखना है return result. देख ले एक बार. सॉर्ट किया हमने, वेक्टर बनाया डुप्लीकेट्स हटाने के लिए. यहाँ पे टू पॉइंटर का अप्रोच है. यहीं पे टू पॉइंटर लग रहा है. कंडीशन सम लिया, सम ग्रेटर देन जीरो, सम लेस देन जीरो और एल्स. लेट्स चेक. एक ना एक तो आना ही होता है भाई. साइज done. This is a better time complexity. How we'll analyze it in a moment. Let's see what lead code gives. Oh, okay, wrong answer. How do you have a wrong answer? First of all, we have a duplicate here, minus 505. We also have another duplicates. Okay, we are having duplicates. Sort I we are fixing I. Now if I is greater than 0 and it's equal, we are continuing it. Now we have pointers I plus 1 R that point. One solution here can be like एक सेट बना देते हैं और फिर बाद में वेक्टर कर देंगे तो डुप्लीकेट हट जाएगा. But that's not the best case here.
that should be it. I think so. Oh, oh, oh. Okay. What it is telling us is कि अगर इसके बाद भी अगर हमने जो यहाँ पे ये बढ़ाया ना L, तो लेट्स से इन दिस एग्जांपल ये L जो यहाँ पे जीरो था, अगर ये बार बार जीरो जीरो आने लगा ना, तो ये L बढ़ के वापस से वो सॉल्यूशन कंसिडर कर देगा। अगर ये R भी यहाँ वन वन आने लगा, तो ये सॉल्यूशन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, है ना। आई मीन, डू यू गेट व्हाट आई से, कि अगर ये जो हमने I के लिए चेक किया है ना, ये पार्ट जो हमने I के लिए चेक किया, तो यहाँ से तो हमने ये डुप्लीकेट्स हटा रहे कि यहाँ माइनस वन रहा तो वो कंसिडर नहीं होगा। बट वंस वी आर सेलेक्टिंग माइनस वन, we can still have 0011, then for minus 1 we'll again get -101। ये बहुत बार मिल जाएगा अपने को। तो हमने एक कंडीशन एल के लिए भी लगा देते हैं यहाँ पे, कि यहाँ से तब तक एल को आगे बढ़ाते हैं जब तक वो एल एक यूनिक वैल्यू ना पड़े। व्हाट आई मीन इज कि इस एल्स वाले लूप के अंदर ही while, ये तो कंडीशन रहना चाहिए, एंड nums at l is equals to nums at l minus 1, तब तक what we do is we increase left। अभी क्या होगा, हम वापस से सेम सेम यहाँ पे जैसे हमने सेम पे गिरे है ना, सेम डुप्लीकेट्स के कारण ये एरर्स आ रहा है, तो ये डुप्लीकेट नहीं बनाएगा शायद। ये तो चलना ही है यहाँ पे, सबमिट करके देखते हैं। देयर आर 315 टेस्ट केसेस एंड वी आर स्टक एट 133। ओके फाइन, सो दिस इज ऑफ कोर्स अ बेटर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू लीड कोड आल्सो, बट वी विल एनालाइज कि कैसे हो रहा है ये। ओके, लेट्स just paste it there and then we'll analyze the time. So by now we are done with the problem of uh, the three sum, and I'm like not good at this particular platform, I get it, Inkdo। Okay, देखो कैसे, we'll now analyze the time complexity here। इस पेन से करते हैं। ये वाला सॉर्ट कर रहा है, ठीक है, n log n ले रहा है, any comparison sort will take n log n। अभी ये वाला ओ बिग ओ यहाँ पे है, कंसिडर बिग ओ है यहाँ पे। अभी ये कितना ले रहा है, ये ऑर्डर ऑफ n ले रहा है, सिंपल। And now what this will take, this take constant time, ठीक है। अभी ये वाला एक पर्टिकुलर पार्ट है जो कि मैक्स टू मैक्स कितना टाइम ले सकता है। मैक्स टू मैक्स तब ही टाइम लेगा ना, मान लो यहाँ पे बहुत सारा कुछ एलिमेंट्स है और यहाँ पे y है, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द एरे, द नम्स वेक्टर, और हमने ये i फिक्स कर रखा है, तो मैक्स टू मैक्स l और r कितना हो सकता है, n-1। तो ये भी हमारा n-1 तो टाइम्स चलेगा ही, प्लस एक टाइम्स कंडीशन चेक करने के लिए चलेगा, तो n-1 plus 1 that is order of n। Oh wait 1 second, this we can't directly write order of n of course, because at the same time you are increasing from the front and as well as back, so इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो सकता है, लेट मी चेक वंस। वी आर कंसिडरिंग सम और फ्रंट और बैक से आगे पीछे कर रहे हैं। ओके, या दिस आल्सो रन्स फॉर ऑर्डर ऑफ n ओनली। तो क्या इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n इंटू n, दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होना चाहिए फिर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन हमारा सॉल्यूशन ले रहा है बिकॉज वी आर नॉट एडिंग एनी एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट वेरिएबल्स और एरेज,
or memory. Is it n square? I'll have to check once the best. Ah, right. The best is order of n square. Gosh, I thought if there was something from order of n also. यहाँ पे n square ही होगा और यही हमारा most suitable solution है for this particular problem. Okay. This is the first problem जहाँ पे order of n square is also considerable. This is something 9 into 10 to the power 6 का uh, वो रन टाइम लेगा if n nums का साइज 3000 है तो पेज कहाँ पे पेज ऐड हो रहा है भाई सीरियसली 6 why is this not coming 2 3 4 5 wait one second this is the hashing वाला पार्ट हैशिंग के बाद वो कोड होना चाहिए जो कि फोर्थ फिफ्थ पे है this should be here hashing hashing का कोड 200 this platform is a bit buggy okay so this problem is done and dusted for today ये हमारा दूसरा problem this problem is very interesting let's see here container with most water I found this problem pretty interesting why I'll show you इसमें क्या बोल रहा है कि you have particular bars consider it as bars placed between uh, uh, let's say in a floor we have in an aquarium say we have bars dividing that aquarium okay now we need to tell uh, the maximum amount of water that aquarium can hold considering that those bars are there okay so जैसे कि यहाँ पे if we consider these two bars then this will be the maximum amount of water that aquarium will be holding so if we consider this and this so ये लेंथ मतलब हाइट में बहुत कम होगा बट विड्थ थोड़ा बढ़ जाएगा और दैट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर द एक्वेरियम विल बी होल्डिंग इंस्टेड ऑफ वाटर लेट्स टेक अनदर एग्जांपल बिकॉज दिस इज अ 2D केस 3D नहीं है वॉल्यूम नहीं है बट एरिया है ओके लेट्स रीड द प्रॉब्लम यू आर गिवन एन अरे इंटीजर इसको इसको वहीं पे लेके आते हैं let's get this drawing also copy image paste image अभी देखो क्या है एक एरे दिया है अपने को n साइज का जहां पे ये पर्टिकुलर बार्स का हाइट लिखा हुआ है ठीक है जो भी साइज है जैसे इसका साइज 1 है ना तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसका 8 है तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है इसका 6 है तो यहाँ पे 6 लिखा है एंड सो ऑन which is ये वही this is what it defines that there are n vertical lines drawn such that two endpoints of ith lines are these two particular endpoints these endpoints are I comma 0 the base I comma 0 and I comma height of I okay this is what it defines what we have to do is find two lines that together with the x-axis forms a container such that the container contains the most water. They should write that this is a 2D case, not a 3D case. So in order to find two containers, the first intuition that we should get is कि हमें area consider करना होगा
है ना। अभी एरिया क्या कंसिडर करना होगा, कैसे करना होगा वो देखते हैं। एरिया क्या होगा इसका, इसका बेस जो है, बेस बोलो या विड्थ बोलो जो भी, और वो जो हाइट है, दैट्स एन एरिया ऑफ a rectangle, right? So what is the height? Height here is nothing but, say we have टू पॉइंटर ही बोलते हैं क्योंकि टू पॉइंटर ही लगेगा, we say I and J. So what will be the height? The height will be the minimum of height at position I or height at position J. You can't say कि इस पोजीशन में वाटर यहाँ पे भी हम रख देंगे, that will flow out, right? That will overflow. So this will be the height. And what will be the base? The base is simply, this is J is bigger, so J minus I. And hence we form our the formula of area here, J minus I multiplied by this particular portion here, this particular portion. Okay, that is the formula. Let's not write it, it's visible. अभी ये फॉर्मूला तो मिल गया है, बट इसको करें कैसे? वन अप्रोच इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि हमने आई यहाँ फिक्स किया, जे यहाँ फिक्स किया, और सारा मतलब आई टू जे इसके लिए, 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 सबके लिए एरिया निकालते गए, और जो भी मैक्सिमम एरिया रहा उसको रिटर्न कर दिया। एक चीज तो ये हो सकता है, इसको कैसे करेंगे, लिख ही लेते हैं ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। ब्रूट फोर्स लिखने से ना मेन जो जो हमारा फाइनल ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होता है उसका एक आइडिया मिलता है कि क्या चीज कहाँ से घटाना है, विच विल गिव अस द आंसर। ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव टू से आंसर इज इक्वल्स टू जीरो, इसे इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर दिया कि अभी भैया जीरो है, ठीक है। फॉर आई टिल द एंड, फॉर जे इज इक्वल्स टू आई प्लस वन टिल द एंड। वाई आई प्लस वन, क्योंकि हमने एक यहाँ से यहाँ तो कंसिडर कर चुके हैं ना। अभी जे आई जब यहाँ रहेगा तो यहाँ से यहाँ क्यों कंसिडर करेंगे जब एक बार हो चुका है तो इसलिए आई प्लस वन से लेते हैं, आगे वाले लेते हैं, ठीक है। अभी नाउ द आंसर विल बी द मैक्सिमम ऑफ द प्रीवियस आंसर। Let's get familiar with this particular notion because this is a very important notion and will be used very quite a few times in lots of questions and in dynamic programming. तो ये वाला नोशन से बहुत फेमिलियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत फेमिलियर होना। सो आर आंसर विल बी द मैक्स ऑफ द प्रीवियस आंसर में जो स्टोर्ड है, ठीक है, आंसर वाले वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसके साथ, और हमारे ये फॉर्मूला के साथ, दैट इज j माइनस आई multiplied by the minimum of height at j और height at I, ठीक है, और फाइनली यू रिटर्न आंसर। तो ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है। अभी देखो, वन सॉल्यूशन आई केम अप विथ वाज कि एक तो ये ब्रूट फोर्स। अभी मेरे को दिमाग में क्या आया कि हमने जो यहाँ पे दो बार काउंट किया ना इसको, तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो ऐसे ही कर दिया, जो कि ऑफकोर्स यहाँ पे डिजायरेबल नहीं है क्योंकि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा। व्हाट व्हाट मोर कैन वी डू? तो अगर किसी तरह इंस्टेंट ऑफ कैलकुलेटिंग हर बार का बेस और हाइट, अगर हम लोग इसको थोड़ा मिनिमाइज कर पाए, तो एक सॉल्यूशन मेरे दिमाग में क्या आया कि विच इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन बट इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज क्वाइट अ गुड सॉल्यूशन आई थिंक, बॉस। हाँ, सपोज हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि अगर हमने क्या किया ना, ये जो सारा बार्स है उसको अकॉर्डिंग टू हाइट अगर हम लोग सॉर्ट कर दे, सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ओके, तो हमारा ग्राफ या बोलो एक्वेरियम बोलो या जो भी बोलो वो किस तरह से दिखेगा, विल लुक लाइक दिस, कि ये सबसे छोटा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम हाइट
इसको कंसिडर करके हम लोग ले सकते हैं मैक्सिमम एरिया रैदर, जो एक मान लो कि इसको हमने फिक्स कर दिया, ये वाले को फिक्स कर दिया, ठीक है, ये वाले बार को। तो वाटर कहाँ से कहाँ तक रहेगा, मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक रहेगा, अगर ये बार के साथ हम ये बार को फिक्स करें, तभी तो ये पर्टिकुलर पूरा एरिया मेरे वाटर से फिल्ड होगा, है ना, राइट। अभी हम इसके साथ इसको करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे तो सिर्फ इतना ही दूर होगा, बट सिंस ये तो एक कंस्ट्रेंट है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हमने सॉर्ट कर दिया, तो वी आर प्रीटी श्योर कि हर बार हमें लास्ट वाले एलिमेंट के साथ ही एरिया को कंसिडर करना है, जो कि सबसे इन दिस के सबसे बड़ा होगा और सबसे दूर होगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि सबसे दूर भी होना चाहिए ना, हमें इंडेक्स सॉर्ट तो कर दिया, बट इंडेक्स मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम इसको हिला नहीं सकते एक्चुअल में ये फिक्स है, ये 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है, इसको थर्ड पे ही रखना है। मान लो ये सॉर्ट करके अगर हमारा सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सेकंड से काउंट करने लगेंगे, तो किसी तरह वी नीड टू सॉर्ट इट अकॉर्डिंग टू द बेस, मतलब हमें इंडेक्स के साथ में ध्यान रख के सॉर्ट करना होगा, विच इज अ प्रॉब्लम हियर, ठीक है, कि बार बार अपने को वो मैप करना पड़ेगा, पहले तो इंडेक्स के साथ, फिर मैप के स्टार्ट वाले के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, और फिर भी शायद कंफर्म ना हो कि यही मैक्सिमम हो। लेट्स से कि दिस इज एट पोजीशन 0 और लेट्स से दिस इज एट पोजीशन 1, तो हमारा इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू सॉर्टिंग ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक वाटर रहेगा, बट ये एक्चुअली अगर पोजीशन 1 पे रहेगा तो इसके बाद ही यही वाला पॉइंट है, तो वाटर यहीं तक होगा, एंड हेंस दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। So this is how I was coming up with solution. So I told you. Now we'll look at the solution of this particular thing using, of course, pointers because the concept is on pointers. ठीक है, अभी पॉइंटर यूज करके ये कैसे करेंगे, ये बहुत सिंपल है। you'll just have to see कि अगर हमने इसमें क्या किया, इसी पर्टिकुलर, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम एक्चुअली, ये तुम ब्रूट फोर्स के बाद या फिर ब्रूट फोर्स से पहले भी सोच सकते हो। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फिक्सिंग टू पॉइंटर्स एट द फर्स्ट पोजीशन एंड एट द लास्ट पोजीशन, ठीक है, ठीक है। अभी इसके अकॉर्डिंग हमने एरिया निकाल लिया, इसका एरिया कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा मिनिमम, लेंगे तो इसका हाइट ये पड़ेगा और ये विड्थ होगा, तो ये पर्टिकुलर एरिया होगा इसका, राइट, यहाँ से यहाँ तक। अभी देखो, हमें जब हमने आई ट्रैवर्स करना है, आई आगे बढ़ाना है या तो जे पीछे करना है, तो हम क्या कर रहे होंगे, हमने विड्थ विड्थ तो वैसे भी घट रहा होगा, ठीक है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, विड्थ तो घटेगा ही, बट क्या हम लोग कुछ ऐसा ये कर सकते हैं, ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन कर सकते हैं कि आई या जे में से वो तभी मूव करे जब हमें कुछ बेनिफिट हो। तो बेनिफिट क्या बचा, अभी देखो, वी नीड टू मैक्सिमाइज बेस साइज एंड वी नीड टू मैक्सिमाइज हाइट, तभी हमारा एरिया सबसे ज्यादा आएगा। तो बेस तो हमने मैक्सिमाइज कर रखा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हाइट मैक्सिमाइज करना है। सो वी विल कंपेयर दैट इन आई और जे विच वन इज बिगर। ओके, क्या कर रहे हैं, वी कंपेयर कि हाइट ऑफ आई बड़ा है या हाइट ऑफ जे बड़ा है। सो इफ हाइट ऑफ आई इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ जे, तो हम क्या करेंगे, अगर ये छोटा है ना, तो हम इसको अगर पीछे कर देंगे तो ये तो लॉस हो जाएगा मेरा, सो हम इसको ही आगे करेंगे। सो नेक्स्ट हॉप पे ये नेक्स्ट पे जाएगा, ठीक है, आई को हमने आगे बढ़ाया, तो अभी आया हमारा हाइट 8, ठीक है, तो अभी हाइट 8 के अकॉर्डिंग वी विल check the area and will reset the area to the next particular height. So यहाँ पे height के according 8 जब रहेगा तो ये सबसे ज्यादा एरिया है, and hence we will be setting the area to this particular thing. अभी then we'll again check, is height of I greater than height of J? Yes. So अभी हम लोग J को मूव करेंगे, और J को कहाँ तक मूव करेंगे, J को वहां तक मूव करेंगे जब तक J से बड़ा कोई पॉइंट ना मिले। तो is this bigger than J? No. So we'll move to this point. Is this bigger than J? Yes. So नाउ जे इज हियर। अभी इसके अकॉर्डिंग हमने हाइट पे ये चेक किया, तो विल गेट समथिंग लाइक दिस,
ये पूरा आएगा एंड देन विल सी कि वो उससे बड़ा है कि नहीं. इन दिस केस यू सी if your height is 8 in this case and your base is 1 2 3 4 5 5 into 8 that's 40. बट हमने पहले वाले केस में जो देखा हमारा हाइट भले 7 था which is the minimum but the base was 1 2 3 4 5 6 7. So पहले का केस में 7 into 7 that was 49 and hence that was bigger than this. So we'll shift it but we won't update the answer, right? यहाँ पे हमारा अपडेशन नहीं होगा ये वाले पार्ट पे. मैक्स खोज रहे हैं ना, मैक्स ऑलरेडी विल बी 49 एंड नॉट दिस पर्टिकुलर थिंग. एंड देन if this is equals to this we may like we may say do we have to consider something like अगर मान लो infinity infinity लेंथ का बीच में आ गया. हाँ देखो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं. अभी भी वी डोंट हैव टू स्टॉप राइट. अभी वी हैव 8 यहाँ पे भी वी हैव 8 यहाँ पे भी. तो इस केस में तो ये दोनों इक्वल है तो क्या करेंगे तब किसी को भी आगे और पीछे कर सकते हैं जब तक कि अगला वाला पॉइंट उससे बड़ा ना हो. ठीक है तब हम लोग चेक कर लेंगे. ठीक है तो बाय दिस वे वी नीड टू शिफ्ट पॉइंटर्स. कैसे वी विल शिफ्ट पॉइंटर अंटिल एंड अनलेस वी गेट द हायर हाइट. ठीक है इसको हम लोग लिखेंगे कैसे यहाँ पे. ये वाला डायग्राम पे देखो इसको यहाँ पे ले रहे हैं और आई एम जस्ट राइटिंग रेफरेंसेस समझने में आ गया है. स्टार्ट यहाँ से करेंगे फिर हमने कंपेयर करना है. इफ हाइट ऑफ आई इज लेस देन हाइट ऑफ जे इफ अगर ऐसा होता है तो आई को तब तक बढ़ाओ जब तक उसका हाइट इस वाले पर्टिकुलर वाले वैल्यू से ज्यादा ना हो. ठीक है तो हमने आई को ही बढ़ा रखा. ठीक है और नहीं तो क्या करो इन दिस केस वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग मतलब कि अगर ये रहा ये वाला कंडीशन इक्वल टू के साथ तब हम जे को पीछे कर देते हैं. we if we do this it's also right but if you do this it's also right. Okay so in this case we'll do is we'll subtract j in this case in up to this point पीछे करेंगे j को. ठीक है let's see how we are coding it. सबसे पहले तो आंसर जैसे हम लोगों ने ब्रूट फोर्स पे कर रखा है we'll have to write answer is equals to 0. टाइम क्या हो रहा है oh we are over time. आंसर 0 रखा int I is equals to 0 j is equals to nums of height of. ठीक है हमने ये सेट कर रखा है. नाउ दिस इज अ वेरी obvious thing in a two pointer approach while I is less than j we'll redefine answer as maximum of what maximum of answer into the same thing height of sorry index j minus I multiplied by minimum of uh, height of j comma height of I. Is it right? J minus 1 j minus I into minimum of these both. Okay अभी हमने हाइट मैक्स आंसर में मैक्सिमम हाइट डाला. नाउ वी विल चेक इफ height of I is less than height of j. अगर ऐसा है तो I को बढ़ाओ. ठीक है और अगर ऐसा नहीं है तो j को कम करो. ठीक है और एट द एंड आंसर को रिटर्न करो. इसका इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली इजी है. height of I is less than height of j. That means decreasing j or moving j will serve no profit to us even if the height is higher. तो हमने क्या किया I को बढ़ाया तो I को यहाँ से यहाँ किया
यहाँ के बाद हमने जे चेक किया, जे छोटा है तो जे को यहाँ से यहाँ किया, तो हमारा आंसर चेक करेंगे तो वो कम ही आएगा उससे, एंड देन जे यहाँ पे आएगा. नाउ इट्स इक्वल, सो दिस विल वर्क अगेन, जे विल शिफ्ट एंड सो ऑन. सो इसका इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ एन. ओके, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि बाहर लिख दिया है. हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आई और जे पूरा ए इस पे एक बार ट्रैवर्स करेगा, ठीक है, दोबारा ट्रैवर्स नहीं करेगा. My keyboard is also a bit. If you click once, it clicks twice. Okay, cool. And I don't believe this, but this will be the most optimal approach. Wait, let's check. 2 pointer technique, 0 n minus 1. ये तो ठीक है. Time complexity बताए. Order of n time. This is okay. This is the most optimal solution here. Don't worry. Cool. So now I will be ending this session for today by just writing the time complexity here once. I'll also be adding a few more questions on 2 pointers if possible. So you might check it. And space complexity is order of one because we don't use any space extra spaces. Okay. So these two are the questions. I did like this question a lot. And yeah, that's it for today, guys. And I hope you are doing the grind along with me. If not, you'll have to start someday or the other day. If you are with me and if you are just like, if you are on yourself also doing things and practicing things, so that will benefit you. See, I am learning when I am teaching or when I am discussing, so it also helps me making this particular playlist of go to DSA grind, and I want ki it helps people also. Even if you don't like my lectures, just be with the just stick to the questions that we provide, try and solve them. If not, discuss it in the group, and just work on it somehow. Okay. So that's it for today's and today, and yeah, we'll be ending. Thank you all. Bye bye. Good night.